Okay. Hi everyone. I just share you with my screen. Okay. Welcome you all in the second day of this HTML CSS workshop. And in previous sessions, we have discussed something. Nothing but just remove this video. I will discuss about video. That's why it should take some time on this. So I just want to minimize the time requirement. That's why I have already added. And once I will tell you how to do these things, we will again show you in our code also. So this is the structure of our website that we designed yesterday, and I hope things were quite straightforward. And I was discussing about only the basics part, and I have taken this template where we have a bigger box, and this bigger box we have four small boxes. Okay, so that's what we have here in our hand. This is the first box, second box, third box, and fourth box. And here is the code. So this is the bigger box. See, this is the bigger box. In this bigger box, we have first box, second box, and then third box, and fourth box. So we have four different boxes. Firstly, I would like to quickly transform this template to this one. I just want to transform this template to this one. So what are the changes? Nothing but just we have to divide this third box into two parts. So it has a two part. So let's do it first. And what is the procedure to create boxes? Actually, this is a bigger box, and within which we have to create two new boxes. That's what our objective is. And we use div open and div close to create one single box. So that's why just let's first find out where exactly our box is. So this box I would like to this white box I would like to partition into two parts. So this one is first, second, and third box. So we will look for this is our bigger box within which this first box, this is second box, and this is third box. So whatever we have written here, we will do it. We will write some other point of time. Let's remove it. So this is our third box. Within this box, I have to create two different boxes. So I am creating first box, okay, and then I am creating another box. Okay, so and whatever I will write here, suppose I am writing some text, some, or I could say left box, and this is nothing but right box. Okay. The moment I will save it and go back to our page to the refresh, so there are some issues. Okay, that is a separate thing, but we have two boxes. The moment we will fix its size, let's see what is happening. So to fix its size, we have to put a CSS code within this that we have already seen कि जितने भी boxes होते हैं उसमें हम उसे height या width allocate करते हैं. So the bigger box has the width of 1000 pixels. तो ये वाला जो बड़ा वाला box है, ये bigger box, it has a size of 1000 pixels. So we will try to partition this white box into two parts such that the effective width is 1000 pixel only. Clear? So let us see. So we will say this box has a width of 200 pixel and another box has a pixel. What should I say? Suppose 750 pixel. Okay. So effectively, this is less than the sum of 750 and 200 is less than 1000 pixels. So that will go. So now refresh it.
So there is no any effect at all. So go and do some more thing. So what we should do? First, we should give the background color just to know whether our box is. So I am just putting some back color. And background color is let's say black or red. Red is the background color. Should be red. So coming back here, तो देखो ये red दिख रहा है ना, मगर ऊपर ये चला गया है. That's why ये थोड़ा इशू कर रहा है. और इसमें अगर मैं background color set करूँ, so background color, so set it pink, है ना, और blue, अगर मैं blue भी ले लेता हूँ, going back and checking, तो ये pink दिखा रहा है ना, लेकिन इसकी width full दिखा रही है, इसकी भी width full दिखा रही है. So this is the issue. So what to do? So see, for that purpose, we have something in our hand that is known as float. Float, float meaning, see, sometimes we have text in right side or text in left side and image in right side. Okay. Sometimes we have image in left side and text in right side. And at some other time we have some mixture and various different situations. So the moment we wish to keep one of the block on left or another block on right, we should say, since I want to keep this block on left, we should say float left, meaning I want to float it to left, and then I would like to float it to right. Clear? So this is a right box. I want to float it to right, and I want that this box would float to, and this width is nothing. This is width. I missed that. The moment I should fix this, let's see what will happen. Okay, है ना? ये बॉक्स यहाँ हो गया और ये बॉक्स इधर चला गया. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये मेन्यू को ऊपर दिखा रहा है ना? So this is one of the kind of problem that we are facing right now. Okay, sir, can you please explain list tag once again? Actually, I joined late. लिस्ट मैंने डिफाइन अभी बताए भी नहीं उसे. जस्ट वेट, अभी मैंने नहीं बताया, अभी मैं ऊपर बता रहा हूँ फिर वो बता. एनीवे, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ऊपर चला जा रहा है. सो फर्स्ट थिंग सी, और एक और प्रॉब्लम है, ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने सेंटर लाइन किया हुआ. देखेंगे अगर हम लोग, ये पहला वाला बॉक्स है, तो इफ यू वी विजिट दिस इज बिगर बॉक्स, दिस फर्स्ट बॉक्स. तो फर्स्ट बॉक्स के स्टाइल शीट पे अगर हम जाएंगे तो कलर व्हाइट किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, हाइट इज 100 पिक्सल, फॉन्ट साइज इज 25 पिक्सल. फॉन्ट साइज अगर इसको जो भी आप फॉन्ट साइज को 25 से 50 कर दोगे तो ये इसका साइज चेंज हो जाएगा. क्लियर? एंड टेक्स्ट अलाइन क्या करना है? सेंटर करना है. तो द मोमेंट मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, ये सेंटर में आ गया, पहले यहाँ पे था. ठीक है. नाउ बट प्रॉब्लम है कि ये हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में आ गया, लेकिन वर्टिकली सेंटर में नहीं आ. वर्टिकली सेंटरिंग के लिए या फिर कोई भी एडजस्टमेंट के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैडिंग. ठीक है. देखो ये एलिमेंट्स जो है ऊपर से कितने डिस्टेंस पे है, लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे है, और अपने राइट से कितने डिस्टेंस पे है, और बॉटम से कितने डिस्टेंस पे है. So there are 4 parameters of padding. Whatever text or element you have in your hand, what is its distance from top, right, bottom, and left? Okay, this is the sequence. So we can pad from top, pad from right, pad from bottom, and pad from left. So if I wish to have a padding from top, I would write it here. Padding top is equal to is nothing but 25 pixel. Let's see कितना होगा. ठीक है. Q form, just mute your mic. Anyway, so going back,
visit our site, refresh it. So this is something, ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया, पहले थोड़ा ऊपर. So अगर मैं इसके CSS कोड को थोड़ा 50 कर दूं, we maintain it to 50. So then you can see, so this is in somehow middle. अभी इसको बढ़ाते चलो, adjust करते चलो, it will be adjusted, not at all. So just improve the font size, save it, come back, refresh, and you will have a bigger text. So this we have did already, meaning we know what is padding. Padding is something that gives you the space within box. ये box है, box के अंदर में ही अगर space चाहिए, so that padding gives us. पैडिंग लगाने का जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो ये नहीं. पैडिंग में होता ये है कि पैडिंग को काउंट करते टॉप से, टॉप, राइट, left, bottom, meaning clockwise. We are going clockwise. So padding, the moment we use padding, we say top is 50 pixel, right is 0 pixel, bottom is 0 pixel, and left is 0 pixel. So we used to pass 4 parameter if you do not have any such other parameters, meaning if you do not want to have uh, if you do not want to take any padding from left, right, and bottom, then be it as 0 pixel. Right? You may write pixel or you may not. That is a different scenario. So this pixel. So the code will be exactly same in this case also. We save it and we can refresh it. There is no any changes we can see here. Okay, I don't think there may be any doubt. Another is margin. Margin is if you want to have a space between two different blocks. Padding is you want to have a space within a block. एक ब्लॉक के अंदर ही हमें स्पेस चाहिए, और मार्जिन बोलता है किसी दो ब्लॉक के बीच का स्पेस चाहिए. ये एक ब्लॉक है, इसके नीचे एक दूसरा ब्लॉक है, इस दोनों ब्लॉक के बीच का स्पेस चाहिए. जैसे मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ये जो ब्लैक बॉक्स है और ये पिंक बॉक्स है, इस दोनों के बीच में मुझे थोड़ा सा एक स्ट्रिप जैसा स्पेस होना पड़ेगा. So then what we will do is, this is a bigger box, this is the first box, and this one is second box. So either in first box or in second box, no matter whether, you can fix this. So I am just taking this component in this first box. So margin again have 4 components. Since this box is in the bottom of the first box, that's why I could say margin bottom only. So like padding, margin also have 4 kind of parameters like top, right, bottom, left, and in the same sequence, meaning first parameter would be the distance from top, second parameter would be distance from right, third parameter would be the distance from bottom, and fourth would be distance from left. And this follows in same sequence. If somewhere you don't want to set margin or padding, then take it as 0. So here we want to keep bottom part, we want to take the difference between we want to have a space between these two boxes. So let's see, we should say that from top we would not pick anything, from right nothing, but from bottom we want to have a 10 pixel of gap, and from left also we don't want anything. And the moment we refresh it, see now we have a space between these two. So margin is used to create a space between two blocks, whereas padding is used to create space within the block. This is the basic difference between margin and padding. And we can observe that there may be the reason that this block and this content block, so this block and this block may not have some sort of margin. That's why there may be the issue. So let's look at, want to create a margin.
ये दोनों जो बॉक्स है, इस दोनों बॉक्स के बीच में हम लोग मार्जिन क्रिएट करते हैं. So let's see if we are able to solve the problem. So from top we don't want anything. Okay. From right also we don't want anything. Actually we have to fix something in bottom part. Okay. So bottom can fix it. The moment we do this, just oh yes, we are able to solve something. But is it an ideal case or something? That is a different matter. Just increase this to 20 and you may be able to see that this goes at its own fixed place. अभी इसके इसके बीच में थोड़ा ज्यादा गैप है, क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ इतनी है और इसकी विड्थ इतनी है. इसको हमने राइट अलाइन करके रखा हुआ है, इसलिए ये एकदम राइट से चिपक के आ रहा है. तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट वांट टू इंक्रीज इट्स विड्थ. द मोमेंट मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी, ये थोड़ा बड़ा हो गया. ये देखो, ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में दो बॉक्सेस हमने क्रिएट किया था, लेफ्ट बॉक्स एंड राइट बॉक्स. राइट बॉक्स की स्पेस में थोड़ा सा just increase. We have this kind of structure now in our hand. And if I would like to fix some text within this box, so we can use paragraph. Okay, we can use any paragraph, writing some text within this. So we use P opening, P close, and within this P opening, P close, I'm writing something. So this okay, save it, file, save, and then go back to your page. See, the content is here. Okay. The moment you repeat this content so many times, जैसे जैसे आप इसको रिपीट करोगे, ये और भी ज़्यादा दिखेगा. हाँ, इस पैराग्राफ को रिपीट करोगे, just repeat the complete paragraph here. You will see. ठीक है, ढेर सारे पैराग्राफ को रिपीट कर दिया है. We are able to see different text in our hand. Okay, similar cases in the left box also. Left box में हम लोग we could fix an image or that image is something. Okay, this image. So just copy its name. Copy its name. Go back to our editor. So this is our left box. The left box. Okay, so this is our right box. This is our left box. Left box. We should say last class में देखा था img src. We should give the path to the image source .png. अगर सेम फोल्डर में रखा हुआ है तो .png देने से काम हो जाना चाहिए. लेट्स सी अभी आ रहा है कि नहीं. जस्ट अभी आ गया है ना. तो लेफ्ट वाले जो हमारे फोल्डर है उसमें ऐसा कुछ आ गया. Image and right side we have something written text with appearance. I think these parts are obvious to you. One more correction I want to put here is, अगर बहुत सारा images होगा और सब images को मैं यहाँ रख दूंगा तो जरूरी नहीं कि मतलब readability जो हमारी है वो बढ़ जाएगी. बहुत सारे files होंगे, बहुत सारे pages होंगे, बहुत सारे images होंगे. So it is a better practice to keep image in a folder. और जब किसी भी साइट पे आप जाओगे तो इमेज जो है वो इमेजेस फोल्डर में ही रखा होता है. तो कभी भी if you are going to work on an industrial project, तो that time you will feel कि अच्छा ये इमेज में रखा होता है. So generally images नेम फोल्डर, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हो, no matter. और मैंने उस इमेज को उसमें रख दिया. लेकिन अभी जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये दिखाएगा लिंक ओके.
है ना। तो लिंक ब्रोक होने क्यों हुआ, क्योंकि अभी मैं एज्यूम कर रहा था कि जहां मेरी फाइल है वहीं पे रखा हुआ है मेरा इमेज, लेकिन अभी जहां मेरी फाइल है वहां से एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मेरी इमेज रखी हुई है। So that I have to pass from this code and I have to say images images folder के अंदर ये वाली फाइल, ठीक है। So if I save it and refresh it, again we have this file. Clear? If you have any doubts, then kindly ask me. हेडिंग दिखा दिया, सिंक क्लियर कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। लिस्ट कैसा होता है, कैसा लिस्ट होता है, मतलब बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर नंबरिंग हो सकती है। सो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, HTML के पास बहुत ही बेसिक टैग है इसके लिए। ये किस टाइप का लिस्ट है जिसमें नंबरिंग नहीं है, इस लिस्ट में क्या है, नंबरिंग है। तो इस दोनों के लिए अलग अलग टाइप के टैग यूज किए जाते हैं। इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड, किसके लिए, किसी ऑर्डर में नहीं है, और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑर्डर में फिक्स किया गया, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर ऐसा लिस्ट बनाना होगा तो हमें क्या करना है, यूएल टैग को यूज करना है। यूएल ओपन यूएल क्लोज, और यूएल ओपन यूएल क्लोज के अंदर जितनी भी चीजें लिखनी है, जितनी भी चीजें लिखनी है 1 2 3 4 जो भी चीजें लिखनी है, उन चीजों को हम li ओपन और li क्लोज के अंदर लिख के जाएंगे। लिस्ट ओपन लिस्ट क्लोज। So this defines the unordered list, and within unordered list you are adding items. So I just wish to check it here. तो अगर मैं इसे कॉफी को इधर से हटा के, अगर मैं कॉपी करके यहाँ मिल्क के पास कर दूँ, तो ये भी यहाँ पे देखो, यहाँ मिल्क है ना, ये कॉफी ओके। और इस लिस्ट को अगर मैं एक बार कॉपी करके if I put it here, तो सी ये बड़ा लिस्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल टैग है। पहले क्या करना है, यूएल लिखना है, और यूएल के अंदर जितने भी एलआई क्रिएट करते चलोगे उतना ये एलिमेंट्स बनता चलेगा। एंड द मोमेंट आप यूएल के बदले इसे ओएल कर दोगे, यूएल के बदले इसे ओएल कर दोगे, तो ये सारी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में बस इतना ही डिफरेंस। दिस वाज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड दिस वाज अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेम, देयर इज नथिंग else, ठीक है। सो हाउ वी यूज, अभी देखो इसको यूज कहाँ करेंगे। I will show you its uses in navigation. नेविगेशन कैसा होता है, या तो हॉरिजॉन्टल नेविगेशन होता है या वर्टिकल नेविगेशन। तो नेविगेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली लिस्ट ही यूज करते हैं। ये क्या है, एक लिस्ट है, लेकिन लिस्ट को हमने क्या किया हुआ, डेकोरेट किया हुआ। वी हैव एडेड सम CSS इन द लिस्ट, ठीक। सो एक जनरल सा पहले लिस्ट बनाओ, ठीक है। मैं इसको फिर से आपको करके दिखा रहा। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं इसको एक दूसरा लिस्ट बना के, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक यूएल ओपन करूंगा और फिर यूएल को क्लोज करूंगा, ठीक है। अब भी इसके अंदर मुझे क्या करना है, एलआई ओपन करनी है और एलआई को क्लोज करनी है, ठीक है। एलआई और एलआई ओपन एंड क्लोज करने के बीच में मैं लिखूंगा आइटम 1। तो आइटम 1 इट शुड शो आउट हियर, ठीक है। मैं इस लिस्ट को थोड़ा नीचे ले जा रहा हूँ सो दैट ग्राफिटी अच्छी लगे, ठीक है। यहाँ नीचे मैं अपना आइटम्स अपने लिस्ट को दिखा इस तरह नीचे। सर वी कैन टेक लिस्ट एज मैनी और मिनिमल, हाँ हाँ संतोष अभी वही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इस आइटम को मैं जितनी बार रिप्लेस करूंगा, कॉपी एंड पेस्ट, तो क्या होता जाएगा, इतने सारे आइटम क्रिएट होते जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, कभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कोई लिंक नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्लिक करने से क्या होगा, लिंक होगा। और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। कोई भी टेक्स्ट को अगर लिंक क्रिएट करना है तो उस टेक्स्ट के पहले ए टैग यूज करते हैं, उस टेक्स्ट के बाद में ए टैग यूज करते हैं, ठीक है। और
ओपनिंग एक ए टैग में एक पैरामीटर डालते हैं HRVF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। अब इसमें आप जो भी लिखते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो हैश लिख दो, ठीक है। ऐसा लिखने से ये क्या हो गया, आइटम 1 बिहेव्स लाइक एन लिंक। तो ये वही स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि एल ओपनिंग एल क्लोज के अंदर हमारा ए ए टैग एंकर टैग या तो जो भी टेक्स्ट है और न्यूज कॉन्टैक्ट अबाउट व्हाट्सएप, तो ये एक मेन्यू ऐसा क्रिएट कर रहा है, क्लियर। अब अब अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला प्रॉब्लम ये है कि जब इस लिस्ट को हम लोग देखते हैं कि यहाँ बुलेट पॉइंट्स दिख रहा है, हमें मेन्यू में पहली बार बुलेट पॉइंट्स चाहिए तो उसे हटाना है। तो स्टाइल शीट कैसे क्या लगाया जाता है, this is actually the Facebook of this workshop. If I will find any time, then I will also discuss the same. But for the time being, mind remember this. लिस्ट स्टाइल टाइप अगर मैं नन कर दिया, क्लियर, तो ये बुलेट पॉइंट्स हट जाए, क्लियर। सो लिस्ट स्टाइल टाइप इज द रिमूव द बुलेट्स एंड मार्जिन और जीरो और पैडिंग जीरो करने से जो भी ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ देन व्हाट वी कुड सी, देखो इसके लिए क्या करना है, हमें जो भी लिस्ट लिखनी है उस लिस्ट को तो मैं लिख ही रहा हूँ। हेड के अंदर एक स्टाइल टैग के अंदर मैंने यूएल, ये जो यूएल है, यूएल एक टैग है, यूएल के लिए का कुछ जनरल सीएसएस कोड लिख दिया। आप इस कोड को यहाँ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस कोड डायरेक्टली, से कट कर लो एंड देन पुट इट हियर, you can put it, it should work, है ना, तो कुछ भी चेंज नहीं, ये वर्क कर। तो हमने क्या किया, इसमें एक स्टाइल लगा दिया, क्या लगा दिया कि ये जो पूरी बड़ी वाली लिस्ट है इसमें क्या हो कि कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं दिखे और जो भी ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग वो जीरो, पहली बात ना। अगली बात ये है कि हमें जब भी ये लिस्ट दिखाना है तो हमें ऐसा तो कि टेक्स्ट पे जब कर्सर डालेंगे तभी क्लिक, इसमें कहीं भी मैं अगर कर्सर डालूं इस पूरे बॉक्स में तो क्लिक होना चाहिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर डालूं तो ये क्लिक होना चाहिए, यही लिंक होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक लिखना पड़ता है। डिस्प्ले कैसा हो, ब्लॉक की तरह डिस्प्ले, और डिस्प्ले का हमने विड्थ को सेट कर दिया 60, तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक। अब इसमें और भी कुछ कुछ चेंजेस हम लोगों ने किए। ये बोल रहा है कि आप देखो स्ट्रक्चर कैसा है हमारे मेन्यू, यूएल के अंदर एल आई है, अब एल आई के अंदर क्या है, ए है ना। तो यूएल एल आई के अंदर जो ए है उस ए में ये फीचर्स इंक्लूड कर दो, ये स्टाइलिंग लगा दो, ऐसा इसका कहना है, क्लियर। आप सामने ये बोल रहा है कि यू कैन ऑल्सो राइट दिस विड्थ पैरामीटर इन यूएल, यूएल में भी हम विड्थ पैरामीटर को इंक्लूड कर सकते हैं, सो इसको आप वेयर हम ले सकते हैं। few more things that we have to do is we can set its background color, background color हमने एक कलर, आप अगर इस कलर्स पे जाओगे तो आपको यहाँ से ये 6 डिजिट का ये कोई भी कलर मिल जाएगा, ऐसा ही दिखेगा as using something, so we have used some color in throughout the list। तो throughout the list का देखो कलर कैसा है, ग्रे है ना, जब मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। अभी जो इसका फॉन्ट का कलर है वो क्या है, ब्लैक है, सो यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, दैट इज ब्लैक, जीरो स्टैंड्स फॉर ब्लैक। अच्छा, पैडिंग लिया हुआ है, पैडिंग राइट से दोनों ही, ऊपर से ऊपर नीचे और लेफ्ट से 16 पिक्सल। अभी टेक्स्ट का कोई डेकोरेशन नहीं कर रहा, और जब मैं इस पे होवर कर रहा हूं तो होवर करने से देयर आर टू थिंग, two event is occurring. First, the background color is changing gray to white, and जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो रहा है, ब्लैक से व्हाइट, दो चीजें हो रही है ना। तो जब कभी भी लिंक पे होवर होगा, होवर होने समय क्या होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो और फ्रंट का कलर चेंज कर दो। तो दिस इज द कंप्लीट कोड दैट it is expecting, and if you use this code you will see this kind of meaning,
ठीक है। तो ये हमें लिस्ट है और स्टाइल टैग को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये इंटरनल स्टाइल सीट है। We can directly copy this style and can put within this. Again, we can simply copy this and can put everywhere in a tag. यहाँ भी सारे a tag को put कर सकते हैं और इस a hover को भी हर जगह पे put कर सकते हैं, लेकिन collectively एक जगह लिखने से it is far easier और कोड का रिपीट नहीं होगा। इसको हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग बोलते हैं। That we may see if we may have time in few other lectures or some other time. But for the time being, just see if I have did the same. ये मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दिया और लिस्ट में मैंने यहाँ पे लिस्ट ओपन लिस्ट क्लोज, इसमें हमारे पास लिंक्स है और इस लिंक्स में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसकी जो स्टाइलिंग है उसको मैंने हेड ओपन और हेड क्लोज के बीच में रख दिया। वही वाली स्टाइलिंग जो अभी हम लोगों ने देखी कि टाइप नन कर दिया, पैडिंग 0 हेड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इज समथिंग। ऐसा करने से वी हैव this as our main. How to get the navigation horizontal or vertical? Yes, good question. See, अभी जब वर्टिकल नेविगेशन था तो हमें कुछ नहीं करना था, लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल नेविगेशन करना है तो मुझे क्या करना है कि जितने भी जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं लिस्ट एलिमेंट, उसको एक पैरामीटर और ऐड करना है, डिस्प्ले इन लाइन। On one way to build horizontal navigation bar is to specify li elements to inline, ठीक है। तो इनलाइन कर देने से क्या होगा, एक के नीचे एक नहीं दिखेगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। जैसा हमारा प्रीवियस केस में था कि जो भी एलिमेंट्स थे वो क्या होने थे, एक के नीचे एक दिख रहा। तो ऐसा नहीं होगा अगर हम इनलाइन इफ यू कुड मेंशन देन इट वुड बी, so it will become a horizontal bar. और अगर आप इसको inline मेंशन नहीं करते हो तो it will be like a vertical bar. So a vertical navigation bar, take this navigation bar from here। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस डुअल को यहाँ से कॉपी करेंगे और मैं क्या सोच रहा कि इसमें लेफ्ट साइड में मैं एक मेन्यू डालूंगा, ये इमेज को हटा दूँ, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट बॉक्स है, ठीक है, ये वाला लेफ्ट बॉक्स है, ठीक, ये लेफ्ट बॉक्स है, इसमें हम इमेज रखते हैं। इसमें मैं इस लिस्ट को रख देता हूँ, ठीक है। अभी since we have two different lists, so either we have to close one and go further, ठीक है, इसको रहने देते हैं। इस लिस्ट को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, जस्ट इस लिस्ट को हटा दिया है। तो इस कोड को भी मैं यहाँ से एक कमेंट ले रहा हूँ, मैं कमेंट लेने से ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जो मैं बड़े ये वर्टिकल लिस्ट था ना, ये तो मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं इसकी स्टाइल शीट कॉपी कर लेना यहाँ से, एंड देन वी आर पुटिंग एवरीथिंग इन द हेड ब्लॉक, ठीक है। तो हेड ब्लॉक से रख दिया, ठीक, टाइम I can change it, save it, and let's see if it is and it is here now, ठीक है, ये यहाँ पे। So these are the two way we could create horizontal and vertical menus. I think few things are clear to you, and the rest of the things, if you will practice more, then I hope you will get your answers. And I will again encourage you to read this web page. So this web pages, at any moment, they, these people are adding some concept, they are explaining it properly. So go through it. If you have any problem, if you still have any problem, then you can write me, or you can contact me, you can send me a text.
Send me an email. Any question? I have 1.5 minutes more. If you have any question, I can take it. Any question from your side? So there are 49 participants. Anyone? Akansha, there, Abhyuday, Man. Okay. Hope you understood the concept about list. Color changing method in Navbar. Color changing method in Navbar is like straightforward. ये वाला hover करने वाला उसे. Are you asking like in hover or what? Yes, sir. होवर को क्या करना है? देखो होवर के अंदर जाना है लिस्ट के होवर में और यहाँ पे आप जो भी कलर डाल सकते हो ना यहाँ पे आप कलर पिकर ले लो W3 के साइड से के साइड से आप जस्ट हैव ए कलर पिकर साइड टू साइड पिकर ले लो और यहाँ से आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? इफ यू लाइक दिस वन you copy it, go to your page, change it, okay.